Bismillah Rahman Rahim. I am Sarah Khan, your instructor for the course titled Application of Statistics in Psychology with course code 509. This is our 28th lecture. All statistical tests we have examined are designed to test hypotheses about specific population parameters. For example, we have used t-test to assess the hypothesis about a population mean or the two population mean differences. These tests typically make assumptions about the population parameters or the population distribution. For analysis of variance, equality of variance is required. They are work under some assumptions about the population distribution or about the population parameters. When we use t-test or when we use f-test or z-test, we need that the population distribution should be normal, and when we use ANOVA, the homogeneity of variance is also required. The test statistics in which we test the hypothesis about the population parameters, that test statistics or the testing hypothesis or the test used for the testing hypothesis are called parametric tests. There are many situations in which the normality of the distribution is faced, but often researchers are confronted with experimental situations in which they do not conform to the requirements of parametric tests. In these situations, it may not be appropriate to use a parametric test, because if the assumptions are violated, the test may lead to an erroneous interpretation for the data. Fortunately, there are several hypothesis testing techniques that provide alternative to the parametric tests, and these alternative tests are called non-parametric tests. In today's lecture, our focus is basically to understand the key differences between the parametric and non-parametric tests. We will start from the introduction of the parametric tests. Then we will discuss the assumptions of the parametric tests. Then we will discuss the test statistics or the types of the tests which are used for the parametric hypothesis testing. Then the non-parametric tests will be introduced. Then the types of the test or the test statistics of non-parametric tests. Last of all, we will see some key differences between the parametric and non-parametric tests. Parametric and non-parametric tests, tests such as the t-test, as I already mentioned, that involve the assumptions either about the specific parameters of the population or about the distribution of the population,
आर रेफर टू एज पैरामीट्रिक टेस्ट, यानी ऐसे तमाम टेस्ट जिसमें हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स के मुतालिक और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ अजम्पशंस जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द homogeneity of the variances such that वो सारे टेस्ट जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स के मुतालिक डिसीजंस करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और कुछ अंडर सम अजम्पशंस काम करते हैं, उन सारे टेस्टों को, उन सारे टेस्ट को हम पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। Whereas the term non-parametric refers to the fact that the chi-square or the rank correlation and some other tests do not require any assumption about the population parameter, nor they test the hypothesis about the population parameters. जबकि अगर हम इसके ऑपोजिट देखें तो पैरामीट्रिक टेस्ट जो हैं वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, इसीलिए हम उन्हें पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो उनकी जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस है वो अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स नहीं होती, इसीलिए हम उन्हें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और पैरामीट्रिक टेस्ट बेसिकली हम एक तो ये के अजम्पशंस हैं कुछ इन्वॉल्व, वो जाहिर है कि पॉपुलेशन पैरामीटर या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक है, और दूसरी बात ये कि जो हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं वो अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स करते हैं, जबकि इसीलिए उन्हें पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ना तो हम अंडर सम अजम्पशंस काम करते हैं अबाउट द स्पेसिफिक पैरामीटर्स और स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, और ना ही हम टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, इसीलिए इन्हें हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। बेसिकली ये एक मेन डिफरेंस है या की डिफरेंस है हम कह सकते हैं बिटवीन द पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो बिफोर conducting any parametric analysis, it is essential to explore the data and validate that certain assumptions are met. यानी जब भी हमने कोई पैरामीट्रिक टेस्ट हमने अप्लाई करना होता है या पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करना होता है अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए अपनी रिसर्च के मुताबिक, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उस टेस्ट की जो अजम्पशंस हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं पूरी हो रही। अगर तो वो पूरी हो रही हों तो हम वो टेस्ट यूज़ करते हैं, अगर वो अजम्पशंस पूरी ना हो रही हों तो हम वो टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टी टेस्ट भी, जी टेस्ट भी और अनोवा का जो एफ टेस्ट है ये सब अंडर सम अजम्पशंस यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मतलब ये कि पैरामीट्रिक टेस्ट या पैरामीट्रिक एनालिसिस करने से पहले हमें ये काम करना है कि हमें अपने डेटा को एक्सप्लोर करना है, और उस डेटा को जो एक्सप्लोर करना है वो ये देखने के लिए करना है कि वो अजम्पशंस जो हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं पूरी हो रही। Parametric test include some of the most commonly used analytical tool to compare the group or groups of data with continuous variable, such as student t-test and analysis of variance, and also the TC test. These tests compare the mean value of the data in the each group. तो जाहिर है कि हमने ये हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी पढ़ चुके हैं और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी पढ़ चुके हैं। ये दोनों टेस्ट जो हैं ये मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। टी टेस्ट जो है वो एक ग्रुप दो ग्रुप्स को कंपेयर करता है या दो रिलेटेड स्कोर विद सेम सैम्पल के मीन्स को कंपेयर करता है, जबकि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स
के डेटा को कंपेयर करता है, मीन्स को कंपेयर करता है। और हमें जो है वो अजम्पशंस देखनी होती हैं कि कौन सा टेस्ट जो है वो अजम्पशंस पूरी कर रहा है कि नहीं। So there are some assumption of parametric tests. We will discuss these are all assumptions, and also we'll discuss how to measure or how to test these assumptions are met or not. So सबसे पहले जो assumption है वो है normal distribution of the population. Normality assumption is the most common assumption. So we can say that the most common assumption is normality. As these tests, parametric tests, are based on the assumption that the sample population are approximately normal. Normal distribution are bell-shaped and symmetric. मैंने जब आपको टी टेस्ट भी पढ़ाया है और इसके अलावा हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, उसमें हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया है। और टी टेस्ट पढ़ाते हुए बहुत सारी जगहों पर जब भी हमने लोकेट किया है रिजेक्शन रीजन को, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बेल शेप्ड होती है उसे बनाकर हमने डिस्कस किया है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो बेल शेप्ड होती है और सिमेट्रिक होती है। दैट्स मीन द मीन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीडियन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल. Most of the members of the normally distributed population have the value close to the mean in the normal population. In the normal population, 96% of the members are within the 2 standard deviation of the mean. जब हम बना लेते हैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें अगर हम देखें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो सेंटर में होता है और सेंटर से 2 standard deviation away from the right side and 2 standard deviation from the left side. ज़्यादातर पॉपुलेशन 96% पॉपुलेशन जैसे कि है वो इसके दरमियान होती है। तकरीबन जब हम ह्यूमन परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, ह्यूमन एबिलिटीज़ की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं ये सारे के सारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. In human performance score on objective testing, the outcome of many athlete exercises and college student grade point average are normally distributed. The normal distribution rarely a normal occurrence. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली अकरेंस का मतलब ये है कि अमूमन जो हमारे इर्द गिर्द या जो वेरिएबल्स हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं ये अमूमन नॉर्मली अकर करते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि एक एबिलिटी एवरेज एबिलिटी बहुत सारे लोगों में होती है, वही एबिलिटी अगर हम देखें अबव एवरेज थोड़े कम लोगों में होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो उससे भी कम लोगों में होती है. इसी तरह से वो एबिलिटी जो बिलो एवरेज है उसमें कम लोगों में होती है और बहुत कम जो है वो भी बहुत कम लोगों में होती है. तो इसका मतलब है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादातर जो एक्यूमुलेशन है ऑफ स्कोर्स वो अराउंड मीन होती है. मीन से बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होती, बहुत ज़्यादा दूर नहीं फैली होती.
तो इस assumption को टेस्ट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं. The first method which we use is to form QQ plot. QQ plot हम डेफिनेटली इसको करना सीखेंगे जब हम SPSS में डेटा फीड करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, तो हम इन assumptions को भी साथ साथ टेस्ट करेंगे. So in these plots, the observed data is plotted against the expected quantiles of the normal distribution. If the data are normal, it will appear as a straight line. ये देखें, straight line के तकरीबन साथ साथ डेटा है. बहुत कम है जो थोड़ा दूर दूर है, लेकिन ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है. बहुत कम लोग हैं जो कि नॉर्मल से थोड़े से हटे हुए हैं, और इधर भी बहुत थोड़े लोग हैं जो कि नॉर्मल से हटे हुए हैं. ठीक है, ज़्यादातर जो स्कोर्स हैं वो एक दरमियान में है. तो ये एक तरह से ये भी एक, अगर हम इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो ये कुछ ऐसी सी बनेगी ऐसे. ठीक है, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से, इस तरह से कराएंगे और इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी. तो एक तरीका तो QQ प्लॉट का है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं. फिर कुछ नॉर्मेलिटी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास SPSS में कुछ टेस्ट हैं. स्पिरोगल टेस्ट है एक कोलमोर-सिमरनॉफ टेस्ट है. ये दोनों टेस्ट इस हाइपोथेसिस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं कि जो सैंपल जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है जी. The null hypothesis for both these tests is that the sample was sampled from a normal distribution of population. So therefore if the p-value is significant, then the assumption of normality has been violated, and the alternative hypothesis that the data must be non-normal is accepted as true. मतलब ये कि जब हम इन दोनों टेस्टों को अप्लाई करते हैं या टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट हमने जो नल हाइपोथेसिस है हमारा वो क्या है कि हमने इस सैंपल को एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है. ठीक है जी. और अगर तो पी वैल्यू जो है 0.05 से कम है तो इसका मतलब है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया. ठीक है, और हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे. इसका मतलब हुआ कि जो सैंपल लिया गया वह नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया. इसका मतलब ये है कि इन दोनों टेस्टों का सिग्निफिकेंट नहीं इनसिग्निफिकेंट होना ज़रूरी है. अगर हमारी पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आती है, यानी 0.06 आ जाती है, 0.09 आ जाती है या 0.15 आ जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे और हम कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है. तो ये टेस्ट भी हम SPSS में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जरिए के वक्त इसको टेस्ट करेंगे. देन नेक्स्ट जो assumption है that is equal variance, or we call it homogeneity of variance, or we call it homoscedasticity. Parametric tests assume that the variance of each group is roughly equal. We can visually check if these assumptions is met by creating side-by-side box plot for each group to see if the box plot of each group are roughly of the same size. Using SPSS, we will also draw these box plots to see the groups are roughly of same size. इसके अलावा जो और तरीका है इस assumption को चेक करने का, वो एक बड़ा स्पेसिफिक वे है, एक टेस्ट भी है जो कि हम इस
जो हमारी assumption है इसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक और जो तरीका है उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे पास लार्ज वेरिएंस ग्रुप वेरिएंसेस हैं, हमारे पास ग्रुप्स है, जिस ग्रुप का वेरिएंस सबसे ज़्यादा है और जिस ग्रुप का वेरिएंस सबसे कम है, ठीक है, उसकी हम रेशो ले लेते हैं, ठीक है। और अगर वो रेशो 4 से कम आती है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वेरिएंसेस आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, okay. So another way to check this if this assumption is met is to use the following rule of thumb. If the ratio of largest variance to the smallest variance is less than 4, then we can assume that variances are approximately equal and use the two sample t-test. For example, suppose the group 1 has a variance of 24.5 and the group 2 has a variance of 15.2. The ratio of largest sample variance to the smaller sample variance would be calculated as हम 24.5 को डिवाइड कर देंगे 15.2 से, तो हमारे पास आंसर आया है वो है 1.61, which is less than 4. So we will conclude that since the ratio is less than 4, we could assume that the variance between the groups are approximately equal. There is another way to check the equality of the variances. And there is a test, Levin's test, to check that the variances are equal for all samples or for all groups of group 1 or group 2. The result from the test is reported as a p-value which can compare to your alpha level for the test. If the p-value is larger than the alpha level, then you can say that the null hypothesis stands, thus the variances are equal. If the p-value is smaller than the alpha level, then the implication is that the variances are unequal. So this test can test the or check the assumption of equal variances is met or not. जब हम टी टेस्ट SPSS पे करते हैं के ज़रिए करते हैं तो उसमें हम जब टी टेस्ट के ऑप्शंस वगैरह को सिलेक्ट करते हैं तो हम इक्वल वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के देखने के लिए कि ये अजम्पशन मेट होती है या नहीं, हम लेविन्स टेस्ट भी को चेक करते हैं, टिक कर देते हैं ताकि इक्वल वेरिएंसेस की जो अजम्पशन है वो भी पूरी हो जाए। तो लेविन्स टेस्ट में भी जो पी वैल्यू है वो पॉइंट हमने अल्फा लेवल सेलेक्ट किया है 0.05, अगर तो जो पी वैल्यू आई है वो अल्फा लेवल से ज़्यादा है, फिर तो हमारा हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस स्टैंड करेगा, हम हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और कंक्लूड करेंगे कि वेरिएंसेस आर इक्वल। और अगर पी वैल्यू स्मॉलर है देन द अल्फा लेवल, यानी 0.05 से कम है, 0.054 है या 0.05 ही है या 0.04 है, 0.01 है या 0.001 है या 0.01 है, तो ये सब अल्फा वैल्यूज़ जो हैं ये स्मॉलर हैं 0.05 से। अगर हमारा जो अल्फा लेवल है वो 0.05 है, अगर वैल्यू अल्फा लेवल की इससे कम आए तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारे वेरिएंसेस हैं वो अनइक्वल हैं। Third assumption is independence. Parametric tests assume that the observation in each group are independent of observations in every other group.
The easiest way to check this assumption is to verify that the data was collected using the probability sampling method, a method in which every member in the population has an equal probability of being selected to be in the sample. So इस assumption को चेक करने के लिए या इस assumption को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम सैम्पल जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए सैम्पल की सिलेक्शन करें। उसमें एक की सिलेक्शन पर दूसरी की सिलेक्शन डिपेंड नहीं करती, बल्कि हर इंडिविजुअल को जो सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है और हर ग्रुप जो मेंबर है वो सिलेक्ट होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। किसी एक की सिलेक्शन पर दूसरी की सिलेक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करती। देन द फोर्थ assumption इज नो आउटलायर्स। जैसे कि मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि 96% जो पॉपुलेशन है वो टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के इर्द गिर्द होती है, लेकिन अगर ये जो स्कोर्स हैं वो तीन स्टैंडर्ड डेविएशन से भी आगे फैले हुए हों तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं होती। और इसका मतलब ये है कि उन स्कोर्स में कोई बहुत बड़े या कोई बहुत छोटे स्कोर्स जो है पाए जाते हैं, यानी आउटलायर्स नॉर्मल से जो बहुत दूर हों उन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं। द पैरामीट्रिक टेस्ट एज्यूम दैट देयर आर नो एक्सट्रीम आउटलायर्स, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ बहुत छोटी या बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए हमारे डेटा में। तो नो एक्सट्रीम आउटलायर्स इन एनी ग्रुप दैट कुड एडवर्सली अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। One way to visually check off the outlier is to create the box plot for each group to see if there are any clear outliers that are much larger than the rest of the other observations in the group. There are some tests: Z-test, T-test and F-test. We are very much familiar with all these tests because we have learned all these tests for hypothesis testing. A Z-test is a statistical test to determine whether two population means are different when the variances are known and the sample size is large. यानी जब कभी हमारे पास ऐसी कोई रिसर्च की सिचुएशन हो जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स नोन हो, ठीक है, और सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा हो, तो हम जी टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी टेस्ट इज अ हाइपोथेसिस टेस्ट इन विच द जी स्टेटिस्टिक्स फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी टेस्ट को भी यूज़ करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। जी टेस्ट इज ऑल्सो अ हाइपोथेसिस टेस्ट इन विच the Z-test follows the normal distribution. The Z-test is the best use when the samples get larger and the samples are considered to be approximately normal. Then the T-test. T-test is used in the situation where a researcher has no prior knowledge about the population. यही डिफरेंस है टी टेस्ट में और जी टेस्ट में। जी टेस्ट में हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स नोन होते हैं, जबकि टी टेस्ट में हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स नोन नहीं होते और सैम्पल साइज थोड़ा छोटा होता है। और जी टेस्ट में पॉपुलेशन जो साइज है सैम्पल साइज जो छोटा होता है इसमें, और जो जी टेस्ट है उसमें जो सैम्पल साइज है वो लार्ज होता है, ठीक है जी। इन पर्टिकुलर द पॉपुलेशन मीन्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर ऑल अननोन बिकॉज द पॉपुलेशन वेरिएंस आर नॉट नोन। दिस वैल्यू मस्ट बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैम्पल डेटा। हम यही करते हैं कि हम पॉपुलेशन से सैम्पल्स ड्रॉ कर लेते हैं और फिर
उन सैम्पल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन सैम्पल का जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसी से हम पॉपुलेशन के बारे में या पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में अंदाज़ा एस्टिमेट करते हैं। द टी टेस्ट इज़ अ पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ डिफरेंसेस measuring that it make the same assumption about your data as the other parametric tests. पैरामीट्रिक टेस्ट में अगर हम टी टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो वन सैम्पल टी टेस्ट होता है, टू सैम्पल टी टेस्ट होता है और रिलेटेड सैम्पल टी टेस्ट होता है। जबकि वन सैम्पल टेस्ट में हमारे पास एक पॉपुलेशन में से हम एक सैम्पल ड्रॉ करते हैं, सैम्पल सेलेक्ट करते हैं और उस सैम्पल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को की बेस पर हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। इसी तरह से टू इंडिपेंडेंट टी सैम्पल टेस्ट में हमारे पास दो पॉपुलेशन से दो डिफरेंट सैम्पल्स होते हैं। हम उन दो पॉपुलेशंस को कंपेयर करने के लिए उन जो सैम्पल हमने ड्रॉ किए हैं उन के मीन्स के डिफरेंस को कंपेयर करते हैं और अगर तो वो मीन डिफरेंस जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद मीन डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों पॉपुलेशंस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफरेंट है। जबकि रिलेटेड सैम्पल टी टेस्ट में हमारे पास सैम्पल एक ही होता है और वो बिफोर एंड आफ्टर दो दफ़ा टेस्ट किया जाता है और इसी तरह से उनके मीन डिफरेंस को भी के ज़रिए ही हम अगर वो सिग्निफिकेंट है तो कंक्लूड करते हैं कि दोनों स्कोरिंग्स में दोनों दफ़ा की स्कोरिंग में बिफोर एंड आफ्टर की स्कोरिंग में फ़र्क है। ये सारे थे हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट। आखिरी जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो हमारे पास एफ टेस्ट जो कि हम अनोवा में इस्तेमाल करते हैं। अनोवा मीन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए हम जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ एफ टेस्ट। द पर्पस ऑफ अनोवा is much the same as the t-test, as we all know. We have already discussed it in very detail. The goal is to determine whether the mean differences that are obtained for the sample data are significantly larger to justify the conclusion that there are mean differences between the population from which the samples were obtained. यहाँ पर ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं और उनके मीन डिफरेंसेस को हम मेजर करते हैं। अगर ये सारे टेस्ट उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब इनके मुताबिक जो असम्पशंस हैं वो फुलफिल होती हैं। Non-parametric test है। Non-parametric test is one that is performed without making any restrictive assumption about the form of the population distribution and associated parameters। यानी जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ये हम पहले भी बता चुके हैं कि ना तो हम अंडर द रिस्ट्रिक्टिव असम्पशंस इन्हें यूज़ करते हैं, वो जो assumptions है about the population distribution or the population parameters। The non-parametric test is also called distribution-free test because it makes no specific assumption about the shape or the form of the underlying population distribution. So these non-parametric tests which provide useful alternatives to the parametric test have several advantages. Some of them are given as follow. Non-parametric tests require no assumption about the form of the parameters of the underlying population. In the other words, they do not require that the samples be drawn from a normal population with the specified parameters. The non-parametric tests are relatively easy to understand and non-parametric tests are computationally simple. अगर हम देखें तो अनोवा की कंपटीशन या एफ टेस्ट की कंपटीशन
काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की कंप्यूटेशनल जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है और जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू with a non-parametric test. The non-parametric test may be applied to the qualitative data that can be ranked but not measured exactly. तो डेटा हमने जब हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसीज में, जब हमारे पास होता है रैंक्स में, जब हमारे पास कोई क्वालिटेटिव डेटा होता है जिसको हमने उनकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से रैंक किया होता है, तो ऐसे सारे डेटास पर हमारी जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो नहीं अप्लाई हो सकते, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमारे पास रैंक डेटा हो, फ्रीक्वेंसीज हो, तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी रिसर्च सिचुएशंस जिसमें हमारी जो अजम्पशंस हैं नॉर्मेलिटी की वो वैलिड होती हैं या पूरी नहीं होती, ऐसी सारी सिचुएशंस में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। सो अगर रैंक डेटा हमारे पास होगा तो हम जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर फ्रीक्वेंसीज के साथ हम डील कर रहे हैं तो का स्क्वायर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम रैंक डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो हम रैंक कोरिलेशन या स्पेयरमैन कोरिलेशन के साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। काफ़ी सारे टेस्ट हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो हैं, उसमें सबसे अहम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है chi-square टेस्ट। chi-square टेस्ट ऑफ गुडनेस of fit and also the independence in contingency tables. The rank correlation coefficient that measures the strength of the relationship between the two sets of the ranked data is also a non-parametric alternative to the simple coefficient correlation. ये सब कुछ मेन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं जिसे हम एक एक करके बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो सबसे पहला जो है उसे हम कहते हैं वन सैंपल विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। विद दिस टेस्ट वी आल्सो एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीडियन एंड कंपेयर इट टू अ रेफरेंस और द टारगेट वैल्यू। Then the Friedman test. This test is used to test for differences between the groups with the ordinal dependent variable. देखिए कि टी टेस्ट में हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रेशो या इंटरवल स्केल पर होता है। ये यहाँ जो ग्रुप डिफरेंसेस को हमने देखना है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स हम देखना है, तो उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऑर्डिनल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर continuous data if the one way ANOVA with repeated measure is inappropriate, that is some assumptions has been violated. Kruskal Wallace test है जी। This use of this test instead of one way ANOVA to find out if two or more medians are different. सेम जिस तरह से हम अनोवा में करते हैं कि हम दो या दो से ज़्यादा मीन वैल्यूज़ को देखते हैं कि वो आपस में डिफरेंट हैं या नहीं। रैंक्स ऑफ द डेटा पॉइंट्स आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन रादर देन फॉर डेटा पॉइंट्स themselves। यानी अगर हमारे पास जो भी डेटा है उसको पहले हम रैंक्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम ये टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। मैन-विटनी टेस्ट है। यूज दिस टेस्ट टू कंपेयर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स when the dependent variable are either ordinal or the continuous. Spearman rank correlation use when you want to find the correlation between the two sets of data with ranks. Key differences between the parametric and non-parametric tests. ये जो की डिफरेंसेस हैं वो एक तरह से आज के लेक्चर की समरी भी है
हमने जितनी भी बातें डिस्कस की हैं अबाउट द पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट सेपरेटली. Here we combine these points to see the actual difference between the parametric and the non-parametric tests. First difference, obviously, these tests, parametric tests, are based on the assumptions using the data connected to the normal distribution used in this analysis. Whereas on the other hand, non-parametric test does not work on assumptions. इन सब से पहले जो पहला डिफरेंस है वो ये कि पैरामीट्रिक टेस्ट अंडर सम assumptions काम करते हैं और जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं वो assumptions के बगैर काम करते हैं. The analysis that is derived from the data in the case of parametric test is called probabilistic distribution. हमारी जितनी भी पैरामीट्रिक टेस्ट हैं वो probability या probabilistic distribution पर बेस करते हैं. On the other hand, in the case of non-parametric probability distribution is arbitrary or their central tendency cannot be measured. In the case of parametric test, data is measured using the mean values, whereas in the non-parametric median value is used. चौथा डिफरेंस है जी that information used varies in both the cases. In the case of parametric, certain knowledge on the population is important because of the parameters related to the population, whereas non-parametric, no previous knowledge of the population is needed. The measurement of variable of interest in the case of parametric is done on interval or the ratio level, whereas on the other hand, nominal of interest is measured during the nominal and ordinal scale in non-parametric test. यानी पैरामीट्रिक टेस्ट में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे रेशियो या कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पे भी हो सकते हैं. Unlike parametric test, there is no requirement of information on population in non-parametric. यानी non-parametric की तरह पैरामीट्रिक की तरह नॉन पैरामीट्रिक में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी हो अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स. पैरामीटर टेस्ट is applicable to only for variable, whereas non-parametric test is applicable both on variable and the attributes. Pearson correlation is used to measure the degree of association between the two different variables in case of parametric test, whereas Spearman rank correlation is used in the non-parametric test. सो बेसिकली वही चीज़ें हैं, वही बातें हैं जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं दोनों पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक. ये कुछ रेफरेंसेस हैं. इन रेफरेंसेस में से ही मैं ये स्लाइड्स बनाती हूँ, तो अगर आपको डीप नॉलेज में होगा तो इन बुक्स को खोल के आपको पढ़ना. बाकी पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के मुताबिक आपकी जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्यूरीज होंगी वो हम जो है क्लास में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह. और जो आपने काम करना है इस पे एंड पर आपने एक कंपैरिजन राइट करना है 2 कॉलम्स की सूरत में. एक पे आप पैरामीट्रिक टेस्ट लिखेंगे और एक कॉलम के हेडिंग जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लिखेंगे. और आज के लेक्चर में जितने भी हमने की डिफरेंसेस जो हैं वो नोटिस किए हैं
जो की डिफरेंसेस हमने देखे हैं उनको आप लिस्ट आउट करोगे। ये आपका टास्क होगा इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।